नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू SBI सिक्योरिटीज़ बोरिंग पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे की लेवल्स और बात करेंगे मेन सेक्टर्स के बारे में जो कि फोकस में है। शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट अपडेट से। ऑन मंडे यूएस इंडाइसेस विटनेस कंसोलिडेशन एंड एंडेड ऑन अ मिक्स्ड नोट। द चॉपी ट्रेडिंग ऑन वॉल स्ट्रीट रिफ्लेक्टेड ट्रेडर्स रिलक्टेंस टू मेक significant moves ahead of the key earning release and economic data later this week. The Dow rose by 0.28%, the S&P 500 edged higher by 0.06%, while the Nasdaq slipped by 0.03%. Going ahead for the S&P 500, the 50-day EMA zone of 5,570 to 5,590 will act as a crucial hurdle, while the zone of 5,460 to 5,440 will act as an immediate support for the index. Talking about Brent crude has recently made multiple attempts to break above its 20-day EMA but has failed to sustain. The daily RSI remains in the sideways zone, indicating indecision. Going forward, a sustained move below the $64 mark could trigger further downside, potentially dragging prices towards the $62 level. Talking about the US dollar index, the US dollar index ended lower by 0.65% on Monday. Currently, it is still trading below its short and long term moving averages. Going ahead, the zone of 98.8 to 98.5 will act as an immediate support for the index. Talking about Nifty's view, after retesting the neckline breakout zone, the benchmark index Nifty has resumed its upward trajectory, closing the session at 24,328 with a gain of 1.2%. It has formed a sizable bullish candle signaling renewed strength. Most noteworthy, the daily RSI took support near the 60 to 62 zone and thereafter rebounded significantly, which is a bullish sign as per the RSI range shift theory. आगे जाके 24,400 टू 24,430 का जोन इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। अगर इंडेक्स 24,430 के ऊपर सस्टेनेबली ट्रेड करता है तो एक तेज़ी बारी रैली देखने को मिल सकता है, जो पहले 24,550 तक जा सकती है और उसके बाद शॉर्ट टर्म में 24,700 तक भी पहुंच सकती है। वही नीचे की तरफ अगर गिरावट आती है तो 24,200 टू 24,180 का जोन एक सपोर्ट देने का काम करेगा। On the derivative front, the April future surged by 1.30%, while the combined open interest for the current next and far series also surged by 7.76%, which indicates an overall long build-up. The 24,400 strike has significant call open interest, followed by the 24,500 strike. On the put side, the 24,300 has substantial open interest, followed by the 24,200 strike. For the weekly series, OIPCR is at 1.18. अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, सो बैंक निफ्टी फाउंड सपोर्ट नियर इट्स 8-day EMA and resumed its upward momentum. It outperformed the frontline indices, closing the session with a robust gain of 1.41%. आगे जाके 55,700 टू 55,800 का जोन इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। वही 55,000 टू 54,900 का जोन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन के रूप में काम करेगा। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, द बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स ऑल्सो विटनेस्ड अ स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आफ्टर फाइंडिंग सपोर्ट नियर इट्स 8-day EMA. It formed a sizable bullish candle on the daily chart, indicating renewed buying interest. आगे जाके 79,900 टू 79,800 का जोन इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। वही ऊपर की तरफ 80,300 टू 80,400 का जोन एक इम्पॉर्टेंट हर्डल के रूप में काम करेगा। On the derivative front, the weekly future surged by 1.37% and the open interest of the current series has also surged by 24.55%, which indicates an overall long build-up. The 80,500 strike has significant call open interest, followed by the 81,000 strike. On the put side, 80,000 has a substantial open interest, followed by a 79,500 strike. The OIPCR is at 1.07. अगर हम की मार्केट इंडिकेटर्स की बात करें, अगर हम इंडिया विक्स की बात करें, द वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स स्लिप बाय ओवर 1%. हाउएवर इट इज स्टिल ट्रेडिंग अबव इट शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस. Going ahead, the zone of 18 to 18.2 will act as an immediate hurdle for the index, while 16 to 15.8 will act as a crucial support. The advanced decline ratio remained flat on Monday. Now, अगर हम की सेक्टर्स की बात करें, टेक्निकली निफ्टी, इंडिया डिफेंस, प्राइवेट बैंक्स, PSU बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑयल एंड गैस, ये सारे सेक्टर्स आर likely to outperform in the short term. Talking about the FI/DI data, so both the FIs and DIs were net buyers yesterday to the tune of 2,474 crores and 2,817 crores respectively.
The FI's long short ratio for index futures is at 42.33, as on a net basis they bought 12,450 index futures. So that's a wrap of today's edition of podcast. Thank you for listening. Do tune in tomorrow for more such market updates and insights. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.